Namaste Gurukulians, hope you are doing well at home. Yesterday we have started chapter number 5 of class 12th and the name of chapter was Principle of Inheritance and Variation. So that was the first video. Today we will continue the same chapter with video second. So this is the second video, part 2 of the same chapter. So first of all, we are just revising what we have studied in your previous video. There were certain terms that what is homozygous. Homozygous means when two same type of alleles are present. Heterozygous means when two different type of alleles, one capital T, one small t is present. What is pure lines? Homozygous are also called as pure lines and heterozygous are also called as hybrids. Yesterday we have already discussed what is monohybrid cross, Mendel's monohybrid cross. So for a quick revision, I will write the same so these are gametes. This is phenotype, genotype, gametes. When the gametes will fuse, this is F1 generation. When we do selfing of F1, then we had two types of gametes from each parent, and by making this combination, we got this cross. So in this cross we found that this is tall, tall, tall and dwarf. This is dwarf just because of the absence of dominant allele. Dominant allele is capital T and recessive allele is small t. So whenever there is a single dominant allele will be present, then it will always express its phenotype irrespective of the presence of another allele. So यहाँ पे डबल टी है तो पक्का टॉल आना ही था. यहाँ पे एक सिंगल कैपिटल टी है तो यहाँ पे भी टॉलनेस आएगी, यहाँ पे भी टॉलनेस और यहाँ आएगी आपकी ड्वार्फनेस. सो अल्टीमेटली वी विल गेट ए रेशियो ऑफ 3:1. दैट वाज फिनोटिपिक रेशियो एंड 1:2:1 इट वाज जीनोटिपिक रेशियो. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. So today we are going to start with Mendel dihybrid cross. Mendel's dihybrid cross. So dihybrid means two, means it will be a cross where we will study the inheritance pattern of two characters simultaneously. Previously it was Mendel's monohybrid cross where we have taken just single character, that is height of plant. Here we are going to take two characters simultaneously. So the cross which will show the inheritance pattern, it is called as dihybrid cross. So we have taken two characters. One character is seed shape. And as we have already discussed in the previous video, that in seed shape, the dominant and recessive. You can just recall that what will be the dominant and recessive trait for this character, seed shape. So it was round is dominant and wrinkled was recessive, while the another character was seed color. For seed color, yellow was dominant and green was
recessive. So this is just a small table. So out of the 7 characters which Mendel have chosen, we have taken just 2 characters, and both the characters have 2 alternative traits. Out of these, one is dominant, another one is recessive. So we are going to start with the cross. So this is Mendel dihybrid cross. It will take space, so I have to rub all this. So we are starting with a plant, a parent plant which is having yellow seeds and round seed shape. So round and yellow, these are 2 properties, 2 different characters. This is one parent, another parent is wrinkled green. So both the parents are pure lines. So whenever we say pure lines, means they are homozygous. Homozygous means both the alleles which are governing a single trait will be same. So these are parents phenotype. You should write each and everything in the left side which will denote what exactly this line denotes. So this is denoting parental phenotype. This is one parent, this is another parent. So we are going to write genotype. So genotype will be capital R, because as we know any plant is, if a plant is diploid, if animal is diploid, then we have to write 2 alleles for a single trait. So both the alleles are dominant for round as in yellow. So capital R, capital Y. And for wrinkled green, which is recessive one, we will use the same letter. We will not write W here. We will write the first letter in small letter. So capital R, this is small r. 2 small r are showing a wrinkled trait. Same from here. Instead of capital Y, we will write small y for green. We are not going to write small g and small g. We will write small y. So characters will be chosen always on the basis of dominant character, dominant trait. So this is genotype. Now what will be formed? Gametes. So here we will show gametes. So as we have already discussed in monohybrid cross, that out of these 2, only one allele will go into gamete. So there will be a gamete, this. So out of these 2 alleles which are governing a trait, only one will go into gamete. This is also called as Mendel's law of segregation. सेग्रीगेशन मतलब अलग हो जाना. यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एलील थे. सो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ द एलील विल गो इनटू गैमीट. So this is called as Mendel's law of segregation. Same here. So the gamete will carry one small r and one small y. Now there will be cross between these 2. So it will give rise to capital R. So instead of writing capital R and capital Y, we will write capital R first, then small r. Again capital Y from here and small y from here. So what will be the phenotype of this F1? So this is your
F1 generation. So we are writing at every step what exactly these are denoting. So this is F1, and what will be the phenotype of F1? So phenotype will be, so here one capital R, one small r, means even in the presence of a single dominant allele, it will always express its trait. So capital R is present, so this it will be round, and due to capital Y it will be yellow. So this will be the phenotype of F1. Now we have to do selfing. Selfing means self-fertilization, not cross-pollination, self-pollination. So we will write the same genotype, capital R, capital Y, small y. Now pay attention, this is called as selfing. This is also called as F1 selfing. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि F1 सेल्फिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो ये हमारा प्लांट था जिसके अंदर दो ऐसे कैरेक्टर थे, ये एक हमने दूसरा प्लांट लिया जिसके अंदर ये दो कैरेक्टर थे रिसेसिव वाले। हमने इस प्लांट के फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे उसको डिपॉजिट किया हमने इस फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। सो क्रॉस पोलिनेशन होगी। नाउ अब जो नेक्स्ट सीड बनेंगे उस प्लांट के अंदर, उस सीड के अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। सो ये वो सीड था, ठीक है। अब मान लो जिस प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके डस्टिंग हुई, वहाँ पे उस प्लांट के अंदर बहुत सारे सीड बने, मान लो 100 सीड्स बन गए। सो जब हमने इन 100 सीड्स को ज़मीन के अंदर लगाया तो उससे 100 प्लांट्स बने, एंड ऑल प्लांट्स आर हैविंग द कैरेक्टर राउंड एंड येलो, ठीक है। नाउ अब जो 100 सीड्स आए, 100 सीड्स से हमने 100 प्लांट लगाए। अब किसी भी दो प्लांट आउट ऑफ दोज 100, किसी भी दो प्लांट में हमने क्या करवानी है, क्रॉस पॉलिनेशन। सो पोलन ग्रेन्स ऑफ दिस प्लांट विल बी डिपॉजिटेड ऑन stigma of this plant. So this is called as selfing. So from here again the same pattern will start, that from this genotype we have to generate gamete. So from this is one parent, this is one parent. So from this parent there will be 4 type of gametes. How we are going to make this? कैपिटल R को कैपिटल Y के साथ एक गैमीट बन गया। अब ये चीज़ ध्यान देना है आपने, डाइहेब्रिड क्रॉस में वी हैव टू कैरी बोथ द एलील्स ऑफ बोथ ट्रेट्स, बट द एलील्स विल बी सिंगल। मीन्स इस कैरेक्टर का कोई एक एलील और इसका कोई एक एलील एक गैमीट में जाएगा। सो एवरी गैमीट विल हैव ओनली 2 एलील्स एंड बोथ एलील्स विल बी फ्रॉम डिफरेंट ट्रेट्स। सो फर्स्ट गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल R विद कैपिटल Y, फर्स्ट गैमीट। सेकंड गैमीट कैपिटल R को स्मॉल y के साथ। नाउ थर्ड गैमीट स्मॉल r को कैपिटल Y के साथ। नाउ स्मॉल r को स्मॉल y के साथ। So we are getting 4 different type of gametes. So 4 gametes from one parent, तो दूसरे पेरेंट से भी 4 गैमीट बनेंगे ऐसे ही। सो वी आर राइटिंग सेम, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। नाउ अब यहाँ से आपका एक और लॉ बनेगा मेंडल्स का। देर आर 3 लॉज ऑफ मेंडल। दिस वन इज द सेकेंड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। फर्स्ट वन इज मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट when 2 factors which are governing a trait are
present in F1 generation, then only one of the factor will express, which is dominant one, and the another will not express, which will be recessive. अब उसी लाइन को हम यहाँ से समझते हैं. मान लो अगर हमने यहाँ पे एक ही करेक्टर लिया होता, एक ही ट्रेट लिया होता, राउंड एंड रिंकल. सो इस राउंड के दो एलील ट्रेट को जो गवर्न करेंगे. अब इसमें से एक आर गया गैमीट में. आउट ऑफ टू ओनली वन ऑफ द एलील और फैक्टर विल बी रिसीव्ड बाय गैमीट. सो जब ये गैमीट, यहाँ वाला गैमीट और ये वाला गैमीट जब दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो यहाँ पे बना कैपिटल आर स्मॉल आर. सो इन F1 जनरेशन ओनली वन ऑफ द एलील, दैट इज डोमिनेंट वन, it will express to produce its phenotype, while small r will not express. This is law of dominance. This is first law of dominance of Mendel. Second law I have already explained. Mendel law of segregation means गैमीट बनने के टाइम पे दो एलील में से कोई एक एलील ही गैमीट में जाएगा. So this is law of segregation and this is universally accepted law. There is no objection on this law. So कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि out of these three laws of Mendel, which one is universally acceptable, जिसके ऊपर कोई objection नहीं है. So that is, answer is Mendel's law of segregation. Now third law, law of independent assortment. इस लॉ को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. थर्ड लॉ, इस लॉ के अंदर ये लॉ वाली भी बात आएगी, सेकंड लॉ वाली. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन दिस लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि ये लॉ जो है ये इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस. मीन्स जहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन देख रहे हैं, वाइल दीज टू आर एक्सप्लेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो टू एक्सप्लेन दिस वी नीड Mendel's dihybrid cross. So this law states that when two factors or alleles which are governing a particular trait, they will always send only one allele during gamete formation. So they will segregate and only one of them will go into gamete. So the transmission of this allele into gamete is independent of the transmission of, which is transmission of capital Y. Means इस कैरेक्टर के ट्रांसमिशन का इस कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के एलील्स के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है. दे विल असॉर्ट, दे विल सेग्रीगेट, दे विल डिपार्ट इंडिपेंडेंटली. एंड अब ये आगे लाइन और ऐड करनी है हमने. एंड दे विल फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशंस. So parental combination was capital R, Y, small r, small y. Here we are finding capital R with small y also, small r with capital Y also. So these are new combinations. So this law states that the transmission of alleles of one character will never interfere with the transmission of alleles of another character. And it will assort independently, and they will again randomly rejoin to form parental as well as recombinant ones. So these are parental forms, capital R, capital Y. ये भी parental form है. ये दोनों जो हैं ये नए हैं, recombination, नया combination. ये पुराना combination है parental. होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. Now there are 4 different alleles for this parent and 4 different alleles for this parent. Now we have to make a table which is called as Punnett square. I am going to write it here.
The name of scientist is Punnett, P-U-N-N-E-T, Punnett square. So here we are going to write, we are going to draw a table. Now we had 4 different type of gametes for one parent and 4 from another parent. So we will write gamete of one parent here. So first was capital Y, capital R, capital Y. Second is capital R, small y. Third is small r, capital Y. And fourth is small r, small y. Same here. So these are parent, second parent, gamete of second parent, gamete of first parent. Capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, and small r, small y. Now we will combine. So 2 letters from here and 2 letters from here. We will write 4 letters, 4 different type of alleles here, but the pattern will be same. Like R के साथ R लिखना है हरदम, Y के साथ Y लिखना है, कभी भी हम RY नहीं लिखेंगे. सो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y. Now in this capital R, capital R. Now here capital Y and here is small y. So we will always write dominant allele first, then recessive allele. So capital R, small y. Now here capital R, small y, capital Y, capital Y. We are just going to complete this. You should practice this table. Capital R, capital Y. Oh, this is small r. I did a mistake here, so I am going to rectify is capital R, small y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small y, small y. You have to practice a lot for this. Capital R, small y, both are small y. Small r, capital Y, small y. Now there are 16 different combinations are there. So this square is called as Punnett square. This is the name of scientist. Now we will write the phenotype. These are genotypes of F2 generation. So what will be the phenotype? कैपिटल आर मीन्स अगर एक बार भी कैपिटल आर आ गया तो मतलब राउंड होगा, और एक बार भी अगर कैपिटल वाई आ गया तो वो येलो होगा. सो वी आर राइटिंग हेयर राउंड येलो क्योंकि इसके अंदर एक कैपिटल वाई आ गया. राउंड येलो, राउंड येलो, अगेन राउंड येलो, round green. This time it will be green because both the Y alleles are small, recessive one. So this is again a round yellow because one capital Y. This is a round green.
round yellow, this is also round yellow, round, this is round green, this is wrinkled because both the alleles for seed shape is small letters, recessive alleles, so it will be a wrinkled. This is yellow. अगेन यहाँ पे wrinkled yellow क्योंकि एक बार कैपिटल वाई आ गया है. दिस इज wrinkled yellow and this is again wrinkled green because both are small y. Now there are 16 members of F2 generation. So now we have to write phenotypic ratio. As in monohybrid case we have done 3:1. 3 were red and 1 was 3 was tall and 1 was dwarf. So here we are also going to write phenotypic ratio. So this is Mendel's dihybrid cross phenotypic ratio. So in here we are clearly finding that there are 4 different type of phenotypes. One is round yellow, second I am writing fourth one wrinkled green. These both are parental one. ये सेम वही हैं जो आपके पेरेंट में थे. Now there will be 2 different, these are called as a recombinant one. So round yellow then round green, it was not a parental combination. Then wrinkled yellow, again it was not a parental combination. So these are a recombinant one. So out of these 16, how many are round yellow? 1 2 3 4. सबसे इजी है, आप इस चीज़ को यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, इमेजिनरी लाइन. मोस्टली आपको इसके इस साइड ही मिलेंगे आपको राउंड येलो. सो अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, या तो इस लाइन के ऊपर वाला बॉक्स या इसके ऊपर, मतलब लाइन वाला बॉक्स या उसके ऊपर वाला. मोस्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो एक्सेप्ट दिस वन, इस लाइन के ऊपर वाले सारे हैं. सो राउंड येलो आर 9. नाउ रिंकल्ड ग्रीन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन था. इट विल बी प्रेजेंट हेयर इन लास्ट. रिंकल्ड ग्रीन जस्ट 1. नाउ राउंड ग्रीन, दिस इज न्यू कॉम्बिनेशन, recombinant. So round green 1, round green 2 and round green 3. There are 3 round green and wrinkled yellow. Wrinkled yellow will be 3 because the total is 16. 9 3 12 3 15 rek 16. So out of these 16, 9 are round yellow, 3 are round green, 3 are wrinkled yellow and 1 is wrinkled green. So this is called as Mendel's dihybrid phenotypic ratio. So we are writing it like 9:3:3:1. So this ratio you will get only when there is no objection. So these are simple crosses which are just based on Mendel laws. Now there are sorry, there are some exceptions to these
crosses and these law. We are also going to discuss this. कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि भाई हमने ये वाली टेबल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बनाई नहीं, तो यहाँ हम ऐसे क्यों बना रहे हैं? ये चीज़ हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी बना सकते थे, मैं उसको बता देता हूँ एक बार फटाफट। सेकेंड पॉइंट इससे रिलेटेड, दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो विल नेवर बी आस्क्ड टू यू, इवन दो यू कैन ड्रॉ द जेनेटिक रेशियो ऑल्सो. जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक में क्या करना है आपने कि कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों चारों ये वाले कितनी बार प्रेजेंट है यहाँ पे, ये चीज़ देखनी है हमने. सो देयर विल बी टोटल 9 कॉम्बिनेशंस. 1:2:2:4:2:2:1:1 1:1:2:4 और इसी को फिर हमने रिपीट करना है 4 के बाद 2:2:1:1 2:2:1:1. सो ये कितना हो गया टोटल आपके 16. So this is the genotypic ratio which will never be asked in exams, and this is the phenotypic ratio. So जो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिखते थे 3:1, वो थी आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशियो. पर अगर हमने 1:2:1 लिखा, दैट वाज जीनोटाइपिक रेशियो. सेम हियर 9:3:3:1 इज मोनो डाइहाइब्रिड phenotypic ratio, while this ratio is Mendel's dihybrid genotypic, not phenotypic. Genotypic ratio is this. तो क्वेश्चन था कि भाई हमने ये वाली टेबल मोनोहाइब्रिड में क्यों नहीं बनाई? हम उसमें भी बना सकते थे. There are 2 methods of representation. तो उसमें हम कैसे बनाते हैं? हमारे पास क्या था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये था. इसकी हमने सेल्फिंग करवाई. जब सेल्फिंग करवाई थी तो यहाँ से 2 टाइप ऑफ गैमीट्स बने. अगेन इस पेरेंट से 2 टाइप ऑफ गैमीट्स बने. हमने किया था डायरेक्टली ऐसे कॉम्बिनेशन बना के, बट वी कैन अगेन ड्रॉ द सेम टेबल एज लाइक दिस. वी विल राइट द गैमीट्स ऑफ वन पेरेंट on this side and gametes of another parent on this side. Now make combination TT small t capital T small t small t small t. This is tall 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 and dwarf. So again 3:1, 3 are tall, 1 is dwarf, and out of these 3 talls, 1 is pure tall and 2 are hybrid tall. So out of these 3, 1:2. ये आपका सेम रहेगा. So total 4. So these are just methods of representation. आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं. But when you are doing dihybrid cross or trihybrid cross, then only this table will help you, because you cannot make combinations. Now we are going to start next topic, and this topic is, we can say, slight deviation from normal monohybrid cross, Mendel's cross, whether it is dihybrid or monohybrid. So these are not following the exact pattern as like monohybrid. So that the name of that topic is incomplete dominance.